वहाँ से एक मिनट, वहाँ से तो ऑन करो ब्लूटूथ। हाँ अब होगा होगा, अभी हुआ है ना? ना वहाँ से ऑन नहीं है ना? जी इसका देख लेती हूँ। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। म्यूजिक ऑन किया तो सुनने नहीं क्या मैक्सिमम आ जाएगा।
Jai Hind, everyone. Jai Hind. That's the way. Yes. किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, उठा के कांटे हटा के पत्थर, फिर उसी के आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल है ये। वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर, वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर भी लड़खड़ाए शिकस्त खाए, लबों पे अपने वो मुस्कुराहट सजा के रखना कमाल है ये। ज़रा सी लग़्ज़िश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक़ ज़माने वाले, ज़रा सी लग़्ज़िश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक़ ज़माने वाले, सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक़ बना के रखना कमाल है ये। किसी को देना ये मशवरा, किसी को देना ये मशवरा कि वो दुख के बिछड़ने का भूल जाए। किसी को देना ये मशवरा कि वो दुख बिछड़ने का भूल जाए, और ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल है ये। ऐसा ही कुछ कमाल करने वाली 5 दिग्गज लेडीज़ हम लोगों के बीच में हैं। And I'm Amreen Zaidi, your host for the session. These women have broken the barriers, crossed the hurdles, and have emerged winners in their own fields. They are all of them, I must say, are an inspiration in their own fields. So let me quickly introduce you to my panelists. Ranjita Sahai Ashish. She's a poetpreneur, a word I heard for the first time. She's the author of 2 books, Sushmanjali 1 and Sushmanjali 2. And also, Aankhon Mein Aasmaan. She's founder of Kshitij organization, conducting Indian iconic poet for budding poets across India since 2018. She's a certified life coach, Mrs. India Most Talented 2018, a media personality, and an international awardee. Next, we have Tanushi Singh. She's just coming here, rushing here from the airport. And guess who she is? What is the session's name? Meet the Poet, right? So who could she be? Poet? Well, she's a civil engineer. She's a civil engineer, a RCC building design consultant, and a full-time school teacher. She's an army wife, mother, and blogger. A poet, author of 4 poetry books. Her first 2 poetry books are international publications, Scribbling of My Soul, Rainbow and Her Moon, which are available in more than 300 countries across the globe. Her 3rd book, Pursuit of Sunshine in the Rain, is a motivational and inspirational autobiographic journey of poet and life. Tanushree asserts that poetry has helped her evolve into a better version of herself. Her poetry is based on her own life, and through her poetry, she believes that she has been able to heal and wishes to spread the message of hope, peace, and give back to life. After Tanushree, we have Mrs. Kiran Parmar. Mrs. Kiran Parmar has been an educator for more than 29 years of experience, imagine. And also 10 plus years of counseling included. Mrs. Parmar is formative in shaping the future and current minds of nation builders. That is you, bachon. Please listen to her very carefully. Mrs. Kiran Parmar has published plethora of poems and articles across several platforms, both in the civil and defense. Mrs. Parmar was honored with the prestigious opportunities to host Gulzar Saha, the acclaimed and famed writer and lyricist at Mangalore,
The opportunities come beckoning in various forms, and most famously doing MC for biennial and reunion celebration of Madras Regimental Centre at Wellington, in the presence of the Governor of Assam for 2 years. Her acute attention to details and unique perspective has always allured the critic's mind, dotting her with several critic columns across various tribunals. She's been a university topper across her MA, MPhil, B.Ed. Mrs. Parmar enthusiastically runs her own YouTube channel, voicing the issues of the society. And then, bachon and ladies and gentlemen, we have Mausmi Kalita Sachdev. She's the director of Griffin Publication. She's the author of 8 books, contributing author to more than 30 international anthologies, and an international acclaimed poet. She's an author coach, skill development trainer, columnist, internationally published poet, motivational speaker, and editor of 2 publishing houses, and a content writer. My God, how do you do it, Mausmi? She has been 2 times awarded by Gujarat Sahitya Academy. Can you imagine? Matlab, kuch kaam karo to zabardast karo. That is her motto in life. And also, she has won prestigious Surya Gaurav Rashtriya Puraskar 2020 by Surya Datta Group of Institutes. She has been awarded India's Most Inspirational Writer 2018 by Indian Awaz. She has also been awarded Nobel Laureate Kavi Rabindranath Tagore Award 2020 by Arpita Foundation. Recently, she has been honored with Dr. Sarvapalli Radhakrishnan Award 2021 by Arpita Foundation in Mathura, India, for her literary achievements and commitments to the society. She has authored more than 12 books. And welcome to the panel, all of you, all my panelists. And finally, we have Mrs. Soni Sangwan. Mrs. Soni Sangwan is a veteran journalist with 2 decades of experience in leading media houses of our country. She has been the chief reporter of Hindustan Times, the editor of Metro Now, associate editor at CNN IBN, deputy editor at Headlines Today, now renamed TV Today, and contributing editor at Gaon Connection. She's the only Indian journalist to have been selected for the prestigious Freedom Forum Journalist in Residence program, where she attended the George Washington University in Washington, D.C. Welcome, my dearest panelists, and I hope you have a great session here. And I come to you with all my questions. A big round of applause for all our panelists, please. So, Mausmi, we'll start with you. You've been a publisher, a poet, author, endless list of awards. Tell us what keeps you going. See, writing is a passion. And when writers have this in you, the writing, the pen keeps me going. You know, whenever you feel lonely, the pen is your company. So the pen is the best companion in life, and books are the best friends. So this keeps me going. When my first poem was published when I was in the 3rd standard. All right, although my parents wanted to choose a different field, but I was always interested in writing. In fact, I still remember I deliberately did my entrance examination in the university. Like, I deliberately did not write a few questions because my field was different and I wanted to choose the field I really loved.
So, and when I see people, motivating me and getting inspiration, for example, I'm an author coach. So I coach students. I coach not only students, the people. Even I have trained 60-year-old to write books. So when I see them, that enthusiasm to write, and I can inspire them to write, so that keeps me going. Number one, during the COVID period, I still remember many were undergoing mood swings, depression, housewives, children, all right, and many came in touch with me. It happened so that I made 2 army wives writers. Now their stories are being published. So they were like, what to do? Kya kare? मतलब ना job, ना कुछ, क्या करें? No, why do you need a job? So I don't need a job, but I want to keep myself busy. So what should keep you busy? All right, pick your pen. And today, they are writing, they are published authors. Similarly, there are people, after retirement, they are good in writing, they have the skill in you, but they do not find the scope, the opportunity, or maybe an inspiration that what should we do after retirement. So we have such people also, we train them, we coach them, they write, we publish them. So this is how, when I see the enthusiasm in them, and when I see people getting inspired from me, that keeps me going. Wonderful. But then how do you bring out the writer in them? Not everyone I know can become a writer and express so well. So how do you bring that out? See, I think every one of you can become a writer if you have emotions. And I know no human being is devoid of emotions. All right? You just need to pick your pen. And I'm a professional editor also. So why are editors existing in this world? To edit your books. Yeah. So you pour your emotion, you pen down your emotions. As editors, we edit your book. If the content is not strong, we would suggest you. That is what author coaching is. We train you. This is not the way. This is the way you have to move on. All right. And when you are trained, we again edit your book, we proofread, we train you like where you can, so that next time you do not commit the same errors. And emotions, as Wordsworth said, for what is poetry? Overflow of emotions. So you can write stories or you can write poetry. You just need to have emotions. If you have emotions in you, you can be a writer. It is not necessary that you become an English writer. You can write in your mother tongue, right? Right. I am an emotional person, so I'll try and write a poetry next. You should. I've never tried my hand at poetry ever. So coming to Mrs. Parmar, Mrs. Kiran Parmar. Mrs. Parmar, tell us about your journey as an educator with such a vast experience, and how did poetry happen, the journey? How did it all start? Yes, thank you so much. Good morning, one and all. सबसे पहले तो ये बोलूँगी कि लिखने की जर्नी कहीं से स्टार्ट नहीं होती. अभी उन्होंने बोला कि इमोशन होने चाहिए. इमोशन भी सब में होते हैं. एवरीवन इज़ फुल ऑफ इमोशन. देयर इज ऐसा कोई आदमी या कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इमोशनलेस है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ राइटर एंड अ कॉमन मैन? कॉमन मैन फील्स, उसको भी अनुभव होता है, लेकिन वो उसको पेन डाउन नहीं करता. लेकिन एक राइटर जो होता है, जब तक वो लिख नहीं लेता, शायद उसको चैन नहीं पड़ता. दिस इज़ हाउ दे रिएक्ट. मेरा ये हुआ कि बिकॉज माई प्रोफेशन टीचिंग is not by chance. It is by choice. Nowadays, many teachers are there who are, by chance they are into this profession. I am by choice. People say because being an army officer 5, you don't have other choice. So you have to be. बिल्कुल ऐसा नहीं है. इसलिए मैं बोलती हूँ मेरा प्रोफेशन बाय चॉइस है. मुझे इतने बच्चों से, और आर्मी आपको क्या करती है, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू टीच देम. शुरू में क्लास 1 भी पढ़ाया, क्लास 2 भी पढ़ाया, क्लास 10 भी पढ़ाया. अभी मैं टेकिंग क्लास 10 and 12 एंड आई डिड काउंसलिंग.
Every mother is a counselor, every teacher is a counselor. There is no need of special training of counseling. तो ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई और बच्चों को सुन सुन के उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या आजकल की पेरेंटिंग के ऊपर बच्चे भी क्वेश्चन उठाते हैं, पेरेंट्स उनकी परवरिश पर क्वेश्चन उठाते हैं. पेरेंट टीचर मीट वाज द थिंग वेयर आई इंस्पायर्ड कि आई शुड स्टार्ट राइटिंग एक्चुअली. So whenever I used to meet parents, they used to only complain about their children. Now my children are sitting here. उनको पता होगा कि आके उनको लगता है कि पेरेंट टीचर मीट ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है. एंड इफ़ योर मदर इज टीचिंग इन अ सेम स्कूल, उसकी तो 10 पेरेंट टीचर मीट हो जाती है ना, कि आके इसने में बता दिया, केमिस्ट्री की टीचर भी आ गई, उसने भी बता. और फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट, माई सन इज नाउ ही इज़ अ कैप्टन सेम रेजिमेंट, माई हस्बैंड्स रेजिमेंट ओनली. उसको लगता था कि मेरी तो 10 होती हैं, एक पेरेंट टीचर मीट नहीं होता. कुछ भी गलत हुआ, टीचर यूज टू कम टू मी, इसने ऐसा कर दिया. वो बोलता था, माँ आप किसी दूसरे स्कूल में क्यों नहीं चले जाते पढ़ाने के लिए, है ना. और फिर 10th एक ऐसा क्लास आई वेयर आई वॉज द क्लास टीचर. आई वेंट टू प्रिंसिपल, आई सेड माई सन इज देयर, मे बी अदर पीपल विल थिंक दैट यू आर पार्शियल, यू नो, उसको नंबर ज़्यादा दे दिए. प्रिंसिपल सेड दैट आई हैव ट्रस्ट, यू प्लीज़ कंटिन्यू, डोंट कम टू मी. आई सेड ओके. सो मैं क्या करती थी, उसको कम नंबर देती थी कि ताकि किसी के दिमाग में ये ना आ जाए. तो उसको लगता था ये तो माँ तो यहाँ रहनी नहीं चाहिए, किसी और स्कूल में चली जानी चाहिए. तो माई डॉटर, शी इज़ एल्डर देन हिम, सो उसने क्या करा, चेंज कर लिया. जैसे 10th में आई, उसको लगा कि मैं, उसने बोला मुझे स्कूल में पढ़ना ही नहीं है, तो मेरा तो स्कूल ही आप चेंज कर दो. आई सेड व्हाई, बिकॉज मैं गर्ल्स स्कूल में जाना चाहती हूँ. उसको लगा कुछ और बोलूँगी तो कुछ और सोचेंगी. सो शी चेंज हर स्कूल. आई वॉज टीचिंग इन मॉन्टफोर्ट एंड रुड़की, शी वेंट टू सेंट एन्स. So I said, chalo, that's great thing. So this is how I started, you know. So All right. Thank you. But now you also have a YouTube channel of yours. yeah, Tell us about that. What is it about? yeah. मैं उसके लिए आपके सामने एक पोइट्री रिसाइट करूँगी. It's not a poetry, it's a kind of a storytelling. YouTube चैनल पे आप मेरी कविताएं सुनेंगे. एक्चुअली लिखा तो बहुत पहले से है. आई ऑल्सो स्टार्टेड राइटिंग व्हेन आई वाज इन क्लास 3. Oh wow. सो आई रोट मेनी पोम्स दैट टाइम. बट अभी कोविड टाइम पे आई थॉट, यू नो, बिकॉज स्कूल बंद कर दिया मैंने. ही वॉज पोस्टेड टू चंडी मंदिर, सो स्कूल बंद हो गए थे. आई सेड अभी घर बैठ के ये यूट्यूब चैनल शुरू किया जाए, सो दैट जो मुझे बोलना है वो मैं लोगों तक पहुंचा सकूं. तो उसमें बहुत बड़ा जो इशू जब 10th और 12th में लेती थी, उसमें सबसे बड़ा इशू ये आता था कि पेरेंट्स स्टार्ट कंपैरिजन, यू नो, विद चिल्ड्रन, कि अगर जो पड़ोस में रह रहा है उसके कितने नंबर आए, तेरे कितने नंबर आए. एंड ये जो मैं आपके सामने पढ़ूंगी, इट्स अ काइंड ऑफ अ रियल स्टोरी. इसमें क्या था कि आप बच्चे भी आजकल दे बिकमिंग, यू नो, वेरी सेंसिटिव नाउअडेज. और हम एज अ पेरेंट हम उनके साथ कहीं बैलेंस बिठा नहीं पाते. और ये बिठाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई आप उनकी भावनाओं को, उनके इमोशंस को समझना ज़रूरी नहीं होता. वी हैव टू गिव स्पेस टू देम. अगर हम वो नहीं देंगे, अगर रिस्पेक्ट नहीं होगी म्यूचुअल, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. उस वक्त क्या हुआ, माई स्टूडेंट ओनली, ही कमिटेड सुसाइड थोड़ा सा बोलने पर ही. तो अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है. अब जितना मैं सुनती थी वो ये होता था कि आजकल प्रेशर बहुत है. सो मैं बच्चों से भी यही बोलना चाहूँगी, यू शुड नो हाउ टू हैंडल द प्रेशर ऑल्सो. जो पेरेंट्स बोलते हैं वो कोई प्रेशराइज करने के लिए नहीं बोलते, शायद वो डर कर बोलते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट कि बच्चे कुछ अच्छा बन जाए. उसी पे मैंने ये लिखा है थोड़ा सा, विच आई एम गोइंग टू रीड इन फ्रंट ऑफ यू. एंड मैंने नाम दिया है इसे स्मृतियाँ. बहुत खुश थे उस दिन हम तुम, बहुत खुश थे उस दिन हम तुम, खुशी से नयन भी हो रहे थे नम. जी हाँ, प्रणय सूत्र में बंधने के 5 अब्द पश्चात मेरी सूनी गोद आज हो रही थी आबाद. मुझे स्मरण है प्रिय, मुझे स्मरण है प्रिय, तुमने पहले मुझे गोद में उठाया, फिर प्यार से मेरी कोख पर हाथ फेराया. ईश्वर का धन्यवाद देने हमने उसका द्वार तक खटखटाया. 9 महीने तक मैंने हर कदम संभल संभल कर उठाया.
प्रसव की पीड़ा सही, फिर कहीं जाकर मैंने तुम्हारा स्पर्श पाया। तुम्हारे नन्हे कदमों व किलकारियों से घर भर गया और जीवन का एक एक पल तुम्हारे पालन पोषण में यूं ही झर गया। दिन, महीने, साल बीतते चले गए और हम तुम्हें ऐसा लगा अच्छे से रहे हैं पाल। अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, शिक्षा तुम्हें देना था हर हाल। तुम पर बस अपने सपनों को थोपते रहे और नंबर 1 रहना है। ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 रहना है, ये तुम्हारे जहन में हम बस रोपते रहे। भूल गए सबका अपना प्रारब्ध है, अपनी नियति है, अपनी चाहत है। एक ही वाक्य से कोई खुश है तो कोई आहत है। तुम्हारी क्षमता का कोई पैमाना था नहीं, जिसे तुमने गलत समझा, शायद हमारे लिए वो था सही। तुम्हें खुलकर अपनी बात कहने का हमने मौका ना दिया, अपनी शर्तें मनवा कर संभवतः तुम्हें मैंने धोखा दिया। याद तो था तुम वही हो, याद तो था तुम वही हो जिसके लिए दर दर भटके थे, पर तुम्हें सदा अव्वल रहना है, इस बात पर भी तो हम अटके थे। और आखिर हमारी बातों पर खरा उतरने के लिए तुमने जी जान लगा दी, और तुमने हमारी बातों पर खरा उतरने के लिए जी जान लगा दी, पर जब खुद को असहाय पाया तो अपनी जान। माँ, मेरा गणित का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ। क्या दिमाग खराब है? सारा दिन मैं और पापा तुम्हारे लिए मरते हैं और तुम। आने दो पापा को, आज नहीं छोड़ेंगे वो तुम्हें। अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ पड़ोस में रहने वाले रमेश के कितने नंबर आए हैं? माँ, मुझसे ज़्यादा। क्यों? जब वो पढ़ सकता है तो तुम क्यों नहीं? तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? सब कुछ ध्यान है मुझे, शायद मैं समझी ही नहीं तुझे। ये कैसे बाल बनाता है, बालों में ना जाने क्या क्या लगाता है, आखिर तू कहाँ चला जाता है? अब ये मीरा कौन है? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? अभी से तुम ये सब कर रहे हो, शायद इसीलिए तुम नहीं पढ़ रहे हो। पहले मैं बिना बोले तुम्हारी हर बात समझती थी, लेकिन अब जैसे नासमझी का चोला पहने थी, इसलिए तुम्हारी हर बात मुझे खटकती थी। कितना गिटार बजाओगे? खेलते ही रहोगे? घर नहीं आना है क्या? चलो अंदर, पापा आने वाले हैं। ये क्या, तुमने सिगरेट पी है? तुम्हारे होंठों का रंग बदल रहा है, कपड़ों से सिगरेट की बू आ रही है। क्या माँ, बस डांटती रहती हो? देखो ना, मैंने ड्राइंग कंपटीशन में 2nd प्राइज जीता है। छोड़ो ये ड्राइंग, ये बताओ साइंस में कितने नंबर आए हैं? तुम तो बस, अब चारों ओर सन्नाटा है, ना कोई शोर मचाता है। टीवी खुले कई दिन बीत गए, बैट पर धूल जमी है और बॉल अपनी जगह स्थिर पड़ी है। ना गिटार से धुन की कोई आवाज़ आई है और ना ही मैंने उसके स्कूल बैग से मीरा के नाम की कोई चिट्ठी पाई है। घर का हर कोना मुझे घूर रहा है, चक्षुकोर से अश्रु बह रहा है। जाने अनजाने ये क्या हो गया? मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था। मैं तो माँ थी, मैंने तो सदा उसका भला ही